तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। लेकिन तुम में से कुछ आता नहीं वहां से, तुम कभी कुछ पूछते नहीं हो इन ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे क्लास में भी कुछ खास नहीं पूछते। बट ओके, लेट मी कंटिन्यू। बट मेहनत करो। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस रिजल्ट। ये है एक छोटा सा थ्योरम। ओके, पता है इसको क्या है, एडमिट। ओके, एक छोटा सा थ्योरम करेंगे, इट्स इजी टू प्रूव। वो ये कि a curve on a surface is a line of curvature. We can use this also as a definition if and only if the normals at consecutive points, the normals at consecutive points on the curve intersect. तो अगर हम कोई सरफेस पे कोई लाइन ऑफ कर्वेचर है, तो उसमें ये है कि अगर मैं नेबरिंग पॉइंट्स के नॉर्मल्स डालूं, सरफेस नॉर्मल्स, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो पैरेलल नहीं होंगे। ऑफ कोर्स प्लेन इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे तो सब कुछ जीरो है। बट प्लेन को छोड़ के लाइन ऑफ कर्वेचर जहां होगी, तो उसके कंसेक्यूटिव नेबरिंग पॉइंट्स, कंसेक्यूटिव मींस बिल्कुल क्लोज में जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट नेबरिंग पॉइंट, इसका ना वो थोड़ा इंक्रीमेंटल डिफरेंस होगा पहले पॉइंट से, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। प्रूफ इसका अगेन सिंपल कैलकुलेशन है। So let me write down, let L and n plus some dn be the unit normals at two consecutive points let's call it P with position vector R and Q with position vector R plus D. If the normals at point P and Q intersect, then n plus n plus n comma n plus, you can remember this is your line of curvature, यहाँ पे r है, यहाँ पे r plus dr है, ठीक है ना। ये जो वेक्टर होगा ये होगा स्मॉल dr, और ये जो वेक्टर है अकॉर्डिंगली यहाँ n है, यहाँ पे अभी हमने दिखाया नहीं इंटरसेक्ट, लेकिन ये जो यहाँ पे नॉर्मल है वो होगा n plus dn। तो अगर ये क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे, उनको एक ट्रायंगल बनाए। सो देन these vectors and dr must be in the same plane, must be coplanar। और कोप्लेनर वेक्टर्स का जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, एंड हेंस देयर ट्रिपल scalar product must be zero. So that is, if I denote that by n plus dn dr is equal to 0. But you do remember that triple scalar product is a determinant, so I can break it into two determinants, yani n dr plus the triple scalar, because it's a determinant,
n dn comma dr is equal to 0. Now, since this is a determinant with two identical columns, so this determinant, therefore this triple scalar product should be 0, which implies that n dn dr must be equal to 0. Let's call this one. Now we know that dr in terms of partials can be written as follows. dr is equal to ru du plus rb dv, and dn is equal to n sub u du plus n sub b dv. Substituting in 1, we get n, पहले क्या था dn अपना, so it would be n sub u du plus n sub b dv plus a comma r sub u du plus r sub v dv is equal to 0. Now again, this is a determinant, so I can break it into 4 actually. So this implies that n, let me write it like this, n sub u du r sub u du plus r sub v dv plus n comma n sub v dv r sub u du plus r sub v dv is equal to 0. अब इनको भी हम ब्रेक कर सकते हैं into 2. So ये बजाएगा n sub u du r sub u du plus n sub u du r sub v dv plus n sub v dv. Oh shit. So break करेंगे हम into 2. Then I have r sub u du plus n sub v dv comma r sub v dv is equal to 0. So हमने इसको break किया into 4 determinants, 4 के production. Now since it is a determinant और this is multiplied with the column, तो ये भी एक column से है, तो इन scalars को हम बाहर निकाल सकते हैं. यानी this should be n sub u r sub u du square plus n sub v dv, oh sorry, comma r sub u, oh my god, लिखा, you have got n sub u r sub v du dv plus, चलो इसको ऐसे लिखते हैं दोनों को मिला के, plus n sub v r sub u all multiplied by du dv plus n sub v d r sub v into dv square is equal to 0. तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया. Now we use the fact जो हमने इससे पहले एक बार इवेलुएट किया था, शायद मैंने 2-3 किए थे, फिर तुम्हें बोला था 1-2 खुद भी करो, हमने ये यूज किया था. Now उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n sub u r sub u वाइनगार्टन इक्वेशंस के टाइम आई थिंक हमने इसको दिखाया था, ये बराबर है em minus fl divided by h. Similarly n sub v r sub u is equal to fm minus gl divided by h, and the third one is n sub u
आर सब वी जो है, ये जो ये ट्रिपल स्केलर है, ये है ई एन माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई एच, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस एन सब वी, आर सब वी, ये बराबर है एफ एन माइनस जी एन डिवाइडेड बाई एच। तो अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें, एंड हेंस वी गेट, हमें मिलेगा क्या, इसको चलो सेकंड नाम देते हैं, हेंस वी गेट फ्रॉम सेकंड, इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें मिलेगा, हेंस वी गेट फ्रॉम सेकंड, जब तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट एम माइनस एफ एल multiplied by du square plus en minus gl du dv plus fn minus gm into dv square is equal to 0, which is the differential equation of the lines of curvature, which is the differential equation of the principal directions, but lines of curvature are precisely those curves जिनकी tangents satisfy करते हैं differential equation of the principal directions. This is the differential equation of the principal, या सीधे मैं लिखता हूँ line of curvature, तो इसको satisfy करते हैं. Thus if the normals at consecutive points on a curve on a surface intersect, it must be a line of curvature. Conversely, let the curve be a line of curvature. So we just reverse the steps. Just reversing the steps in the above, and then it must satisfy this equation, and we can just reversing the steps, we get हमें मिलेगा n dn dr is equal to 0, which can be written as n plus dn dr is equal to 0, which implies that वही पे लिखते हैं n plus dn dr are coplanar, which implies that n and n plus dn intersect, यानी the consecutive points which normal है वो intersect करेंगे. So okay, let's leave it there then. तो मैं end करता हूँ पहले, let me stop sharing. चलो कल फिर से